A 70-year-old man who lives in a group home is brought to the emergency department due to 3 months of persistent cough and anorexia. The cough occurs mainly in early morning and is often productive. He has a history of chronic kidney disease, type 2 diabetes mellitus, and an ischemic stroke that resulted in right-sided residual paralysis. He has never smoked cigarettes. Temperature is 38.2 degrees centigrade. Blood pressure is 124 by 80 millimeters of mercury. Pulse is 90 per minute and respirations are 16 per minute. BMI is 22 kg per meter square. Examination shows cervical lymphadenopathy and muscle wasting. Okay. Cardiopulmonary examination shows no abnormalities. Laboratory testing results are as follows. Complete blood count, hemoglobin 10 gram per deciliter, leukocytes 7800 per mm cube, neutrophils 70%, lymphocytes 20%, monocytes 10%, serum chemistry creatinine 2.8 milligram per dl, total protein 8 gram per dl, albumin 2.8 gram per dl. Chest X-ray is shown in the exhibit. Tuberculin skin testing is negative. Which of the following is most likely diagnosis? Wait करो. जी आपा. मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा. I don't have any clue. What should I pick? E ऑप्शन है ही नहीं इधर. क्या अटेम्प्ट करोगी? Okay. Gravimetry with polyanxieties, but तुम बड़ी maybe no. होशियार हो. हाँ, नहीं भी आता तो भी सही कर दी हो. Tuberculosis, maybe tuberculosis. क्यों tuberculosis? Immunocompromised Oh my patient. god, why immunocompromised आपा? Immunocompromised है ना, because उसके वो तो chronic kidney disease की patient और उसको कुछ चल रही थी ना. बड़ी तेज हो तुम आपा, बड़ी तेज हो. हमें गलत करवाती हो. हाँ, तो ये तो बहुत I don't know actually. I was not sure. I don't have any ये clue. मैं पिक्चर पढ़नी Just कब I just सीखूंगा assume आपा? it. हाँ, ये मैं पिक्चर पढ़नी I कब just सीखूंगा? assume ये it. कैविटेशन, ये इन्फिल्ट्रेट. Cavitation. Okay. उम्र गुजर गई लेकिन मुझे पिक्चर समझ में नहीं आती अभी भी. ये भी मुझे लेक्चर्स भी नहीं. देखने, मुझे एक्सरे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सीखनी है सारी चीज़ें. अच्छा कोई अच्छा लेक्चर मिले तो मुझे भी भेज देना. बीएनसी के एक्सरे कुछ और लेक्चर्स थे, मैं देखता एक्सरे हूँ. ईसीजी. हाँ, हाँ, मेरे लैपटॉप में होंगे. अल्ट्रासोनोग्राफी का. आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप. बीएनबी को कुछ लेक्चर्स हैं जो मैंने फाइनल ईयर में सुने थे. आई फाउंड देम हेल्पफुल. लेट्स सी. Despite his negative
tuberculin skin test results. Several features of this elderly patient's presentation are concerning for pulmonary tuberculosis TB. Risk of reactivation TB is significantly increased 6 to 50 fold in chronic kidney disease due to impairments in cell-mediated immunity, which usually serves as a protective mechanism against intracellular organisms. For example, latent Mycobacterium tuberculosis, CMI, cell-mediated immunity. Okay, क्या कह रहे हैं? Risk of reactivation of sorry. Despite its negative tuberculin skin testing, several features of this elderly patient's presentation are concerning for PTB, pulmonary tuberculosis. Risk of reactivation TB is significantly increased 6 to 50 fold in chronic kidney disease due to impairments in cell-mediated immunity, which usually serves as protective mechanism against intracellular organism, latent Mycobacterium tuberculosis. Cell-mediated immunity is also required to generate induration against TST. हाँ ये और एक important क्या 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 कह रहे हैं? tuberculin test negative. Those who don't have अबे enough immunity, हाँ those who are immunocompromised, their शिट TST will be negative. यार नाइस ब्रो नाइस 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 ये बात तो हकीकत है कि जिनकी बिल्कुल टिप होती है देयर फोर इन पेशेंट सीकेडी टीएसटी अनर्जी आता है फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है जबकि एक्चुअल टीबी होती है इज कॉमन एंड नेगेटिव टीएसटी कैन नॉट रूल आउट टीबी इन्फेक्शन माशाल्लाह क्या कॉन्सेप्ट है CMI is also required to generate induration against the TST. नाइस ये सवाल भी किया था हमने अगेन वही बात स्टेप 1 उसमें सवाल नहीं आता था कि चेक क्या चेक करते हैं न्यूट्रोपिन एक पेशेंट होता है तो वो बोलता है कि कैसे चेक करोगे इसको तो यही उसमें करते हैं कि उसकी ट्यूबरकुलोसिस That टेस्ट time वो the HIV patient दे दी थी, but this time CKD patient. CKD पेशेंट एंड ओल्डर पेशेंट है तो उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होगी लिखा भी है ना उन्होंने कि टीबी इज इन reactive TB increases in 6 to 50 fold in chronic kidney disease due to impairment in cell mediated immunity. अब इसका मैकेनिज्म तो खैर देखना पड़ेगा बाकी समझ में यही आता है कि ओल्डर पेशेंट है तो उस वजह से और सीकेडी की वजह से बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो वो अपना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इम्पेयर हो रही है एक और भी रीज़न है क्योंकि यूरिमिक जो कंटेंट है ना आपका वो एसिडिक है ठीक है अगर वो ब्लड से फिल्टर नहीं होगा ना सही तरह से सारे काम बिगाड़ के रखते जैसे प्लेटिलेट थ्रोम्बोस प्लेटिलेट सही से काम नहीं करते यूरीमिया में को रीज़न क्या है यही नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स क्योंकि वो अब किडनी बाहर नहीं निकाल रही तो वो गंद बचाएंगे अंदर दिस इज लाइक अकमलेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट बदबू मारते हैं दिस स्मेल ओके younger patients with active pulmonary TB frequently have fever and cough. In contrast, older patients such as this one often have non-specific symptoms such as weeks or months of fatigue, anorexia, wasting, weight loss. Mild productive cough may occur particularly in the mornings, overnight pooling of secretions की वजह से. Lymphadenopathy particularly highlighted seen on this patient's X-ray. Cervical reflecting lymphatic spread is common. Laboratory findings suggestive of TB in this patient include anemia, likely anemia of chronic disease in the setting of inflammation, monocytosis. Led findings, monocytes differentiate into macrophages which are important for granulomatous antimycobacterial response. Monocytosis led findings, monocytes differentiate into macrophages which are important for granulomatous antimycobacterial response. Hypergammaglobulinemia, elevated total protein in this patient. Hypergammaglobulinemia, elevated total protein in this patient, reflecting the heterogeneous antibody response against Mycobacterium tuberculosis. Hypoalbuminemia, late finding, particularly in elderly.
possibly due to inflammatory cytokines stimulating production of acute phase reactants at the expense of albumin. In addition, although not obviously present in this patient, malnutrition often coexists with TB, compounding hypoalbuminemia. नॉर्मल एल्ब्यूमिन लेवल्स कितने होते हैं आपका? 4 to 8. किसका नॉर्मल लेवल? एल्बुमिन। एल्बुमिन 6 to 7.8 3.5 टोटल। टोटल प्रोटीन 3.5 to 5.5, ये पोटेशियम वाले लेवल्स। ग्लोबुलिन 2.3 to 3.5 ग्राम पर डील। एंड लेब्स आर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद होनी चाहिए। टोटल रिकम्बेंट 6.0 to 7.8 ग्राम पर डील। उसके बाद आपका टोटल वाज नॉर्मल लेकिन एल्बुमिन वाज कम। ओके 3.5 to 5.5 ग्राम पर डील। ओके ओके Okay. Hypoalbuminemia, late finding, particularly in elderly, possibly due to inflammatory cytokines stimulating production of acute phase reactants at the expense of albumin. In addition, हाँ, nice, 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 nice. ये समझना आपा, ये चीज़ हमारे फर्स्ट एड में भी लिखी हुई है थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में, याद है? दिखाऊं? No. ना करो आप, हाँ. ना करो आप, संगत में ऐसा ना करो। Acute phase reactant. अब जब तुम एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स पढ़ती हो ना, तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस इन्फ्लेमेशन में एक्यूट फेज रिएक्टेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है? एक चीज़ ये। अब यहाँ आओ तुम एल्ब्यूमिन में, ये लिखो, ये देखो, रिडक्शन कंजर्व्स अमीनो एसिड्स फॉर पॉजिटिव रिएक्टेंट्स, कि जो एल्ब्यूमिन है वो डाउन रेगुलेट होती है, कम होती है, क्योंकि जो प्रोटीन कंटेंट है वो आपके इन में यूज़ हो रिएक्टेंट्स बनाने में। यही चीज़ इसने यूवर्ड ने यहाँ लिखी हुई है, देखो देखो, hypoalbuminemia, late finding, particularly in elderly, possibly due to inflammatory cytokine stimulating production of acute phase reactants at the expense of albumin, कि वो एल्ब्यूमिन को यूज करके inflammatory cytokine बनाता है। In addition, although not obviously present in this patient, malnutrition often coexists with TB, compounding hypoalbuminemia. In addition, although not obviously present in this patient, malnutrition often coexists with TB, compounding hypoalbuminemia. ठीक है? Hypergamma-globulinemia, normal gamma-globulin. Hypergamma-globulinemia and hypoalbuminemia. These are also feature of TB. बिल्कुल ठीक है। या यूं याद करो कि ग्लोबुलिन कंटेंट बढ़ जाता है, एल्ब्यूमिन कंटेंट कम हो जाता है। एल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन ग्लोबुलिन ले जाता है, इसीलिए टोटल प्रोटीन एवरेज जाके बन रहा है। Okay. ठीक है, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ बैलेंस, हालांकि इम्बैलेंस है बट मतलब ओके। अपर लोब कैविटेशन एंड हाइलार लिम्फेडिनोपैथी, ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ये कैविटेशन ये है मतलब, है ना? जिसको उसको दिल करता है मार्क कर देता है, ये कैविटेशन है, उठाओ। ABCDs याद है मुझे, एक्सरे में बस वही याद आता है, A फॉर एयरवे, B फॉर बोन, C फॉर कार्डियक मार्कर, ये कार्डियक मार्किंग ये वाली बीच वाली, D फॉर डायाफ्राम, E फॉर इलेक्ट्रोड वगैरह तो नहीं लगा हुआ कोई, ये इनफिल्ट्रेट है। सही है। Upper lobe cavitation and hilar lymphadenopathy as seen in this patient are classic, although older individuals frequently have multifocal radiographic infiltrates. Due to all these differences, the diagnosis of TB in older patients can easily be missed or delayed.
Due to all these differences, the diagnosis of TB in older patients can easily be missed or delayed. अच्छा तो ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो ओल्डर पेशेंट के लिए आई थॉट दैट इट्स जनरलाइज्ड एवरीवन के लिए मोनोसाइटोसिस हाइपरकामोग्लोबिनेमिया हाइपोअल्बुमिनिया जनरलाइज्ड क्या लग रहा है मुझे भी in ओल्डर this पेशेंट patient include laboratory findings I maybe this patient is not older it's a younger patient oh no it's 70 year हाँ older गलत है। older patient ये ठीक है, अंदर हाँ से यंग होगा लेकिन अपना दिल का यंग होगा, लेकिन जिस्म का तो बूढ़ा है चाचा। 40 old हाँ। हाँ अच्छा तो ओल्डर पेशेंट के लिए ये एनीमिया मोनोसाइटोसिस हाइपरगामाग्लोबिनेमिया हाइपोएल्बुमिनेमिया बस ये कहना चाहता है कि जो अपर लोब कैविटेशन और जो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है वो क्लासिक साइंस तो हैं, लेकिन ओल्डर पेशेंट जो होता है उसमें मल्टीफोकल रेडियोग्राफिक इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं। जैसे ये इन्फिल्ट्रेट्स थे, ये इन्फिल्ट्रेट हैं पूरे, मल्टीफोकल रेडियोग्राफिक इन्फिल्ट्रेट्स। जहाँ जहाँ वाइट नज़र आ रहा है वो इन्फिल्ट्रेट होना चाहिए। Infectious mononucleosis can cause adenopathy, fever, and systemic symptoms. For example, anorexia, fatigue, some of which can last for a prolonged time. Some of which can last for a prolonged time. However, it usually affects young adults and would be uncommon in this patient's age group. Symptoms typically last a few weeks rather than months, and productive cough and cavitary lesions are not seen. Granulomatosis with polyangiitis typically Granulomatosis with polyangiitis presents with upper or lower respiratory symptoms and renal insufficiency. Glomerulonephritis radiographic findings may include multiple nodules that may be cavitary. A single large cavitary lesion with associated hilar lymphadenopathy is uncommon. In addition, most patients have upper airway symptoms, for example, otitis media, rhinosinusitis. Although small cell lung cancer can cause cough and anorexia, it typically occurs exclusively in smokers and presents with a large hilar mass. Cavitary lesions are more common with squamous cell carcinoma. Pulmonary tuberculosis is common in older individuals with comorbidities, for example, renal failure due to waning cell mediated immunity. Older patients often have fatigue, weight loss, and anorexia. Cavitation is seen less often on chest x ray. Okay. Older patients often have fatigue, weight loss, amnesia, cavitation is seen less often on chest X-ray. अच्छा पढ़ो, रीड करो। अच्छा, which of the following is most likely diagnosis in this patient? 2-day-old boy evaluated in nursery due to difficulty breathing for the past hour. The patient was born with TB gestation via spontaneous vaginal delivery to a woman, gravida 1 and para 1. The mother labored for 6 hours at home. Fracture of the membrane occurred 2 hours prior to delivery and the fluid was cleared. The patient was born in Paris just after the parents arrived at the hospital. No medication were given prior to delivery. The pregnancy was complicated by urinary tract infection due to Streptococcus agalactia in the second trimester. The patient was initially well appeared and roomed in with his parents. But over the past hour, he has developed respiratory distress. Temperature 37, respiration 70, oxygen saturation 91%, grunting and nasal flaring and intercostal subcostal retraction are seen. Chest auscultation demonstrates diffuse cracking. Heart examination is normal. Chest X-ray reveals bilateral patchy alveolar density with pleural diffusion. Acha, which of the following is most likely diagnosis in this patient?
I picked my answer. हाँ आप क्या अटेम्प्ट करिए उसमें? ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया अदर थिंग मैच नहीं कर रही है. Transient academia, the presentation is not like this. Pulmonary hypoplasia and meconium aspiration. Pulmonary hypoplasia and respiratory distress. These two are from preterm, premature baby. Meconium aspiration, immediate presentation. तो एक ही तो रहती है streptococcal pneumonia. Neonatal group B streptococcal infection pathogenesis. Most common causes of neonatal sepsis, pneumonia, meningitis, early onset, age greater than less than 1 week, usually exposure to bacteria in maternal genital tract, late onset, age greater than 1 week, usually exposure to colonized contacts, sepsis, pneumonia, meningitis. Temperature instability, for example, fever, hypothermia, irritability, lethargy, poor feeding, tachycardia, hypotension, respiratory distress, for example, tachypnea, grunting, focal infection, late onset, septic arthritis, cellulitis. Prevention, intrapartum antibiotic prophylaxis for mothers with positive screening GBS culture 8-36 weeks. Intrapartum antibiotic prophylaxis for mothers with positive screening group B streptococcus culture 8-36 weeks. This neonate who developed respiratory distress in the first week of life after being initially well has chest X-ray findings of alveolar densities and pleural effusions. These findings are consistent with bacterial pneumonia. The most common cause of early onset, age less than 7 days neonatal pneumonia is Streptococcus agalactiae or group B Streptococcus, a gram-positive bacterium that can colonize the maternal genital tract and infect infants on exposure to their mucosal membranes or lungs. This at-risk mother, for example, GBS urinary tract infection during pregnancy, did not receive intrapartum antibiotic prophylaxis due to the rapid delivery, increasing the risk for neonatal GBS infection. GBS most commonly causes neonatal sepsis but can present with pneumonia in a minority of cases. Symptoms typically develop within hours to days of birth, include respiratory distress, for example, tachypnea, nasal flaring, retractions, and hypoxia. Temperature instability, i.e., hypothermia, fever, may be present. Clinical presentation is non-specific because neonatal meningitis and sepsis can present similarly to pneumonia, but classic chest X-ray findings, for example, diffuse alveolar densities with pleural effusions, confirm the diagnosis of pneumonia. Empiric treatment of pneumonia in a newborn is ampicillin and gentamicin. If GBS is isolated from blood, i.e. pneumonia and bacteremia, coverage can be narrowed to penicillin G alone.
इसने क्या बोला उसमें सिंपल 2-4 जुमलों में बताओ, आसान उर्दू में। अच्छा तो यहाँ पे वैसे ना डिलीवरी हुई थी ना उसका मम्मी का तो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी और वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए इम्यून नहीं थी। लास्ट मंथ आफ्टर 37 वीक वी यूजुअली गिव स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस प्रोफाइलिसिस ना तो उसको ना वो नहीं मिली। तो ड्यूरिंग vaginal delivery उस this baby is infected with group B streptococcus and after that we read in the table ना the before 7 days and after 7 days late onset and early onset. तो इसको early onset with an hour or with an hour a day of birth बस birth के अंदर उसको group B streptococcus pneumonia हो गई थी। So that's why he or she, or whatever. She present with respiratory distress, hypoxia, this kind of thing. Like pneumonia feature. Typical pneumonia feature. ये बोल रही है. Or it can happen after 7 days also. That's the late finding. And chest X-ray, this is a confirmatory diagnosis. Chest X-ray confirm the diagnosis of pneumonia. And you have to give empiric treatment, ampicillin gentamicin. ठीक है। Educational objective group B streptococcus is Ehrlichia is most common pathogen in early onset less than age 7 days neonatal pneumonia. Symptoms include respiratory distress, for example, retraction, comma, tachypnea and hypoxia, and chest X-ray reveals diffuse alveolar opacities, often with pleural effusions. Mm. Choice B. Meconium aspiration presents at birth with respiratory distress. Chest X-ray reveals linear or patchy densities and hyperinflation. This patient was initially well and had clear rather than meconium stained amniotic fluid, making this diagnosis unlikely. Pulmonary hypoplasia leads to respiratory distress immediately after birth. In addition, it is usually associated with oligohydramnios or congenital diaphragmatic hernia. Neither was present in this patient. Respiratory distress syndrome is caused by surfactant deficiency and chest X-ray findings may look similar to those of bacterial pneumonia. However, respiratory distress and cyanosis present within hours, not days, after birth and typically affect premature, not term newborns. Transient Mm. tachypnea of newborn is a self-limited condition that presents with at birth, not age 2 days, with respiratory distress. In addition, chest X-ray reveals fluid in the interlobar fissures and perihilar vascular markings, not alveolar densities. Mm. पढ़ो उसको रीड करो. Transient tachypnea of newborn, respiratory distress syndrome, and persistent pulmonary hypertension. Transient tachypnea of the newborn, inadequate alveolar fluid clearance at birth. In pathophysiology, actually, inadequate alveolar fluid clearance at birth. Tachypnea shortly after birth resolved by day 2 of life. And chest X-ray finding bilateral perihilar linear streaking, fluid with intralobar fissure. So this thing is important. In chest X-ray, we find that fluid with an interlobar fissure. There is a the horizontal line, or there is a fissure. We can see in chest X. If we see that means it's transient acne of the pneumo, and it will resolve automatically. So you have to reassure the parents. Then respiratory distress syndrome, surfactant deficiency, alveolar collapse, and diffuse atelectasis. Clinical feature prematurity, severe respiratory distress, and cyanosis. Chest X-ray diffuse groundless appearance with low lung volume, and here bronchogram. Now the persistent pulmonary hypertension. Persistent pulmonary hypertension pathophysiology, high pulmonary vascular resistance. High pulmonary vascular resistance drive to lesion. Tachypnea and severe cyanosis. Chest X-ray, clear lung with decreased pulmonary vascularity. Persistent pulmonary hypertension means alveolar is not opening yet. स्लो करके ओपन कर रही है ना. हाई pulmonary vascular resistance. हाँ.
So that's why right to lead chant is still present. ठीक है. Hmm. This is fluid fissure. This is a typical picture of transient tachypnea pneumonia. Hmm. Hmm. ये तो Ring enhancing टॉक्सो lesion. नहीं है ये. Hmm. Single ring enhancing lesion. सिंगल रिंग एनहांसिंग लीजन तो And ईबीवी में patient, मिलता है. ईबीवी का ट्रीटमेंट तो यहाँ नहीं uh, लिखा हुआ. गेंसैक्लोविर देंगे. ईबीवी में तो ट्रीटमेंट क्या देते हैं? read it if there is any silicone count, then A 31-year-old man is brought to the emergency department by his friends due to 3 weeks of headache and progressive confusion. His friends note that he has also been aggressive and inappropriately suspicious, which is not typical for him. The patient is a flight attendant and frequently works on international flights. He has a history of HIV infection and sometimes skips antiretroviral therapy when he travels. His friends are unsure if he takes the other prophylactic medications. Temperature zyada, blood pressure normal, 102 pulse, appears unkempt, disoriented, ataxia, right side hemiparesis, ब्रेन में ऊपर सारा फालतू का एच आई वी है. बस इतना याद. ये कि ये चीज़ है. दूसरा सिंगल लीजन में नॉर्मली हम ईबीवी होता है. ईबीवी का ट्रीटमेंट पता नहीं क्या होता है वैसे नॉर्मली. ये तो एचआईवी पेशेंट ना तो आई सीएमवी भी थिंक करवा सकते हैं बट ये तो टॉक्सोप्लाज्मा होना चाहिए. टॉक्सोप्लाज्मा. एचआईवी पेशेंट टॉक्सोप्लाज्मा. हाँ, ट्राइमेथोपेन सल्फामेथासोजल होना चाहिए ना. सारा तुमने शहर घुमा के फिर करवाया. आते साथ मैंने बोला टीएमपी एसएमएक्स तुम मान नहीं रही थी. हाँ नहीं, पूरा मुल्क हाँ, घुमा के फिर तुम लेके आई मल्टीपल. गलत. हाय 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 आपा. हाय हाय आपा. हम दोनों के मुंह में ये धूल. सीरियल लेंगे, ये हम मल्टीपल, दोनों ये के मुंह में मल्टीपल, धूल सॉरी. आपा. हाँ, ठीक है. तुम्हारा धूल पता है मिट्टी को जस्ट बोलते हैं. एक, हाँ एक पे ऊपर फोकस की थी. ये मल्टीपल रीइंफोर्मेशन. आपा तुम मुझसे बड़ी हो वरना बड़ी ना होती ना आज मैं तुम्हें. बट शुक्र करो ये 3-4 साल पहले पैदा हो गई. शुक्र करो तुम. ठीक है. चलो. Educational objective. Toxoplasmosis is a common opportunistic infection in patients with AIDS who have CD4 counts of less than 100 per mm cube. Primary prophylaxis with TMP SMX prevents active infection. TMP SMX is generally given to the patients with AIDS who have CD4 count of less than 100 per mm cube. Positive toxoplasma IgG serology. TMP SMX is also effective in preventing pneumocystis pneumoniae. पढ़ो. रीड करो. दिस पेशेंट विथ. this patient with HIV has neurological symptom, headache, confusion, focal deficit, fever, and evidence of ring enhancing lesion on MRI, raising strong suspicion for toxoplasmosis. Most cases can occur due to reactivation of the toxoplasma gondii, a wide prevalent intracellular protozoa, due to a severe deficit in cell-mediated immunity, AIDS with CD4 count less than 100. Primary prophylaxis against toxoplasmosis is highly effective at preventing the condition in those with advanced AIDS. Therefore, all patients with HIV undergo laboratory evaluation, toxoplasma gondii IgG testing for exposure. Those with positive serology who have CD4 count less than 100 require primary prophylaxis with trimethoprim sulfamethoxazole, which reduces the risk for toxoplasma 0 to 2%. अच्छा. Patient on antiretroviral therapy, antiretroviral treatment can usually discontinue trimethoprim sulfamethoxazole prophylaxis when the CD4 count is more than 200. Patient on antiretroviral treatment can usually discontinue trimethoprim sulfamethoxazole prophylaxis when CD4 count less than 200 for 3 months and there is adequate viral suppression. Trimethoprim sulfamethoxazole is also used for primary prophylaxis against chemocystic cerevisial pneumonia for those with CD4 count less than 200. So this info not new actually, but if the CD4 count is more than 200, then we can stop this trimethoprim sulfamethoxazole for 3 months. No? Hmm. Um,
this. No, not for 3 months. It's like the if the CD4 cell count is more than 200 for 3 months, then we can stop this trimethoprim बिल्कुल sulfamethylazone. बिल्कुल 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 गुड। चलें आगे। हाँ, A 1-year-old girl is brought to the emergency department by her mother due to 1 day history of fever and drowsiness. The child has been irritable since yesterday. एक दिन की हिस्ट्री है फीवर और ड्राउजीनेस की, ठीक है, और चाइल्ड जो है वो इरिटेबल रहा है कल से लेकर। ऑन एग्जामिनेशन ही इज हाइपोथर्मिक, लेथार्जिक एंड हैज नकल रिजिडिटी। शी फ्लेक्सेस हर हिप्स व्हेन हर नेक इज फ्लेक्स्ड, करने की साइन जो मिलती है, ठीक है। शी अपीयर्स सेप्टिक एंड लार्ज पिटिकल परपूरिक और रैश लीजन्स आर डेवलपिंग ऑन हर बॉडी। Okay, in the ED, she suddenly becomes hypotensive despite aggressive fluid and I pick my antibiotic answer. resuscitation। हाँ, ये नीचे मैं वही ऑप्शन देखने गया था, एड्रिनल रीनल फेल्यूर, एड्रिनल ग्लैंड Gland फेल्यूर, failure. हाँ, cause of बर्टनॉल initial ऑफ फ्रेडरिक्सन meningitis. सिंड्रोम। आगे चलो फिलहाल, ये अभी सुबह को ही देख के चुप करना, बेसिलर इंजियोमेटोसिस पिक्चर से ही पता चल रहा है। ओके, कैपोसिस सार्कोमा भी तो हो सकते हैं ना ना? करो आप, सुबह को ये पिक्चर एज इट इज पिक्चर देखी है हमने बेसिलर इंजियोमेटोसिस में। हाँ, बट वो तो काफी सिमिलर है ना, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, अच्छा, रीड इट। नहीं नहीं रुको, दोनों आगे आगे टीचर चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। सिमिलर। नींद आ रही है असल में, सवाल पहले अटेम्प्ट कर लें फिर पढ़ते रहते हैं ऑप्शन। ओके, मतलब कॉग्निटिव फेज जो है वो यूज़ कर लो, फिर रट्टे मारते हैं आगे। व्हाट इज़ द मोस्ट, क्योंकि अभी मुझे आंखें और मेरी नम बढ़ दी जाएंगी। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। ओके, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है इसका, प्लेटिलेट काउंट बहुत कम है इसका, ल्यूकोसाइड काउंट बहुत कम है इसका, न्यूट्रोफिल 56, इजनोफिल 1, 33, 10, टोटल प्रोटीन ओके, टोटल बिलिरुबिन ओके, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ओके, एएसटी एएलटी थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, पेंसाइटोपिनिया, पेंसाइटोपिनिया वाले का क्या करेंगे, मोस्ट स्टेप नेक्स्ट, ठीक है। आओ ऊपर देखते हैं क्या है। 32 साल का जवान आया है मेरे पास, खूबसूरत लड़का। वो कहता है कि फिजिशियन को कि मुझे 2 दिन से फीवर है, हेडेक है, मलेज है और मायालजियाज है। वाह वाह, इतने सारे मसले, ठीक है। फैमिली So I मेंबर्स, pick my answer. अरे ना करो आप, ऐसे मजाक It कर दिया was तो like चुप this. करो। हाँ, Family members say that he seems slightly confused. He recalls getting a tick bite 2 weeks ago. Doxycycline दो। ओके, सबर करो फिर भी। हाँ। ओके, ये दोस्तों से जब पिक करो ना, आंसर पिक करो, चलो। ना ये आंसर, ठीक ठीक बोल के ना, आरकानसा सूट, तो वो तो लाइन उस तरह चला जा रही है। तो टॉक्सी इसको तो मेरे। ये क्यों है सारा अर्ली की अल्लाह, ये आगे क्रिसमस। नहीं बात सुनाओ, ये इसको वो क्यों है सारा, इसका पेनसाइटोपिनिया क्यों लगी पड़ी है इसको, किस खुशी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है। ओए 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 हाँ, ओए कैसे ओए लगे? ओए 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 ओए, नाइस, सही। टिक बाइट से तो मैं डॉक्सी कर लेता, लेकिन फिर मुझे परेशानी होती इसमें कि ये क्यों हुआ है। चलो तुम साथ हो तो और क्या चाहिए, अगर तुम साथ हो। ओके, नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट स्टेप इन द मैनेजमेंट। सबर करना, हाँ वैसे नहीं कहोगे, कर लिया, आई पिक माय आंसर। ओके, a 3-year-old previously healthy boy is brought to the emergency department due to day-long history of vomiting, diarrhea, abdominal pain and fever. Okay, vomiting, diarrhea, abdominal pain, fever. The patient has vomited 3 times and 5 watery stools. He has no ear pain, urinary symptoms and voided 3 times today. Temperature 38, blood pressure ठीक है, और पल्स जो है 102, respiration 20. On physical examination, patient is not in acute distress. Buccal mucous membranes are slightly dark, capillary refill 2 seconds. Skin turgor is normal. The patient has mild discomfort on deep palpation on the center of abdomen. Mild discomfort on deep palpation on the center of abdomen. There is no rigidity, rebound, or regarding bowel movements are hyperactive. Admit to the hospital for intravenous fluids. Discharge home with oral rehydration solution, abdominal X-ray, fecal leukocyte testing. obtain stool culture। कभी सोचने दो, और रिहैबिलिटेशन उसके। सोचने ओके, दो, फिर करने को सोचते। सोचने दो आप जानी। अच्छा, अच्छा। 2 मिनट। 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 2 मिनट
तुम बताओ क्या कर रही हो? Why discomfort? Everything is normal. Just the episode of vomiting diarrhea. These are the thing, ना? वही तो बात तो है, मुझे खुद को बी लग रहा है, बट तुम डिस्कस बताओ। करते हो टीचर्स रूम में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मैं इसको सही करूँगा, आपा कुछ भी हो जाए। फिर इसको अच्छा ऐसे भी उल्लू सही के कर पट्टे को सकते हो फीवर ना। क्यों हो रहा है? ओके। वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस थी? अच्छा, हाई फीवर था। आपने कहा सब चीज़ नॉर्मल है। खैर मैं इसमें भूल गया, मुझे लग तो यही रहा था, फिर मैंने ओवर ज़्यादा सोचा। मैंने कहा इतना इजी कैसे देगा, दे दिया इसने ही। ज्यादा थी उसका जो मसला थी ना, वो तो जस्ट अब इसमें ये वॉमिटिंग हो डायरिया उसकी जाएगा, वजह से हाँ। थी। तो अदर थिंग तो ठीक ठाक है हाँ होना। फीवर था, तो मैंने सोचा शायद इसको फीवर, पर मैंने एज सही से नहीं देखी। मुझे एज याद नहीं, अभी मुझे देख रहा हूँ कि बच्चा है। लाइक बच्चे में वायरल के होने के चांसेस ज़्यादा। आई वॉज टोटली थिंकिंग अबाउट बैक्टीरियल डायरिया, बट ठीक है, ओके, गॉट इट। मैंने भंड मारा ज़्यादा सोच के। ओके, which of the following valvular dysfunction is likely to be detected in this patient? A 35-year-old man comes to the physician with a 2-week history of low-grade fever and progressive weakness. Okay, he has a long history of heart murmur, does not use illicit drug, splinter hemorrhages, small petechiae on the palatal mucosa, and an audible murmur. His erythrocyte sedimentation rate is 96, hematuria 1 plus, प्रोटीन यूरिया 1+। ठीक है, वेलुलर डिसफंक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है इसको, और माउथ के मसलों की वजह से है, तो स्ट्रैप विरिडियन वाली। और स्ट्रैप विरिडियन वाली ज़्यादा इन्वॉल्व करती है माइट्रल को। माइट्रल पे फिर रिगर्जिटेशन होनी चाहिए आपा। क्या कहती हो? हाँ मैट्रल तो ऑब्वियस बट मे बी मैट्रल रिगर्जिटेशन। नहीं, मे बी नहीं, ये भी फर्स्ट एड, अगेन फर्स्ट एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड। नो बट देयर इज अ थिंग। आवाज़ कट गई आपा आपकी। आपा, आपकी आवाज़ कट गई आपा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ब्रो। यहाँ नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ था फिर माइट्रल रिगर्जिटेशन वाला? ये लिखा हुआ है बंटी ब्रो, माइट्रल रिगर्जिटेशन। ये लिखा हुआ है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स कैन प्रीडिस्पोज टू। हाँ, आई वॉज सेइंग कि इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस वाला ये लिखा हुआ है यहाँ पे। माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लिखा हुआ है, और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में लिखा हुआ है कि कैन प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, और एंडोकार्डाइटिस जनरली ए आर में भी लिखा हुआ है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। बट एज फार एज आई रिमेंबर, तो एम आर माइट्रल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है आपके एओर्टिक से, और एम आर मोर देन एम वी पी मोर देन ए आर। बाकी वो जो रोमैटिक फीवर वाला है वो अभी अलग से लिखा हुआ है, उसमें भी एक अलग चीज़ लिखी हुई है, एक्यूट। ये देखो, माइट्रल ग्रेटर देन, एओर्टिक ग्रेटर देन ट्राइकस्पिड, और माइट्रल की भी रिगर्जिटेशन। अर्ली में रिगर्जिटेशन, लेट में स्थिनोसिस होती है। हाँ, अर्ली में रिगर्जिटेशन, लेट में स्थिनोसिस, ऐसे ही होता है ना? हाँ हाँ ये लिखा ऐसे हुआ ही है, कुछ था। आर्मी में रिगर्जिटेशन 319 पेज है ना, लेट्स सी रुक जाओ मुझे हाँ। देखने दो। ये वाला मेरा उसमें बुक में एनोटेटेड है ना। ग्रेट लेस देन 20 years एम आर, ग्रेटर देन 30 years एम एस। अर्ली में एम आर, लेट में एम एस। एमएस हाँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? जब डायग्नोसिस करनी हो तो यहाँ से पढ़ा जाता है अमूमन। टेम्परेचर
लेकिन पीछे से रूरल मिसिसिपी देखती आओ, क्योंकि तुम्हें हिस्टोप्लाज्मोसिस डायग्नोस करने में आसानी होगी। ठीक है। देखो ये होता है, आप मिसिसिपी पढ़ा, डायग्नोस कर लिया। अगर ये नहीं होती सेंटेंस मिसिसिपी देख के तो ब्लास्टो भी हो सकती है। मेरे वैसे बहुत सही होंगे, एक आधा गलत हो भी क्या खैर है। नींद नींद जब तुम्हें नींद आ रही हो ना, तब तुम ऐसे किया करो, तुम्हारे सही होते हैं। ठीक है। अब पता है मैं कम सोच रहा हूँ ना, सवाल सही हो रहे हैं, ज्यादा सोचता हूँ सवाल इधर उधर करके आता हूँ। ग्राम स्ट्रेन ऑफ लिम्फ नोड एस्पायरेट शोज, और ये प्रॉब्लम होती है जेनुअनली ओवर एनालाइज करना। ये मेरी बचपन से ही प्रॉब्लम है। ठीक है। जब से मैं एंट्रेंस टेस्ट दिया हूँ ना, मुझे ओवर एनालाइज करने की बहुत गंदी आदत है। ओके, get back to it. Gram stain of the lymph node aspirate shows numerous white blood cells with many tiny intracellular gram negative cocobacilli. अब ये याद रहते ही नहीं है। ओके, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई विच ऑफ द फॉलोइंग, दिल कर रहा है पोस्चर और मल्टीसेट ठोक दूं। चलो पढ़ते हैं पूरा। A 32-year-old woman comes to the emergency department due to an ulcer on forearm. जस्ट बेसिक ना मार्जी आज एक क्वेश्चन की थी ना, जस्ट बेसिक है। ग्राम नेगेटिव बेसिक है, कोको बेसिक नहीं है। अच्छा, पोस्टरल मल्टीसेट कोकोबैसिलाई नहीं है, सही। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, याद करना पड़ेगा। बोलती हूँ तो याद कर लेता हूँ। The lesion started as a small papule and has progressively worsened over the past week. The patient works as an animal control officer in a small rural town. Temperature 38, blood pressure 120, pulse 96, respiration 16, lung auscultation by clear, heart sounds normal, no epileptus splenomegaly. On the lateral forearm, there is a 5 centimeter round erythematous maculopapular lesion with an area of central ulceration, with an area of central ulceration, with an area of central ulceration, with an area of central ulceration. Erythematous maculopapular lesion with an area of central ulceration lesion. तो सोचने दो वाला. Several prominent fluctuant tender lymph nodes are present in the left axilla. Sporotrichosis. No, why trichosis? इस पेशेंट तो the animal handler ना, trichosis तो animal handler को तो नहीं होगी ना, ये tular anemia. सही सही Rarely these kind of things. सही। ओके, ये पढ़ा भी था, अल्सरोग्लैंडुलर सिंड्रोम। हाँ। नॉइस अपा नॉइस, अल्सरोग्लैंडुलर सिंड्रोम। आते हैं वापस इन पे। यहाँ से हमने एक्सप्लेनेशन छोड़ा था, इसका पढ़ा था, इसका पढ़ लिया था। ओके, अब ये सवाल था जो हमने क्योंकि एन मेनिंजाइटिस का क्लियर केस था और हाइपोटेंसिव हो गई हॉस्पिटल में जाके, बच्चा जो था बच्ची, तो प्रॉब्लम इसके हाइपोटेंसिव इसलिए हो रही क्योंकि एड्रिनल हेमरेजिक फीवर होता है ये। ठीक है। In an infant with meningococcemia, watch out for Waterhouse-Friderichsen syndrome, which is characterized by a sudden vasomotor collapse and skin rash, large purpuric lesions on the flanks due to adrenal hemorrhage. Fulminant meningococcemia can occur after a meningococcus infection, and approximately 10 to 20% of the infants present with vasomotor collapse, large petechiae and purpuric lesions. The condition carries an almost 100% mortality. Okay. वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम की 100% मॉर्टेलिटी आपा कि बेबी जो है उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होंगे. Sudden vasomotor collapse and skin rash, purpuric lesion on the flanks due to adrenal hemorrhage. Fulminant meningococcemia can occur after meningococcus infection. Approximately 10 to 20% of infants with 10 to 20% infants present with vasomotor complex, large petechiae and purpuric lesions. Educational objective in an infant with meningococcemia: watch out for Waterhouse-Friderichsen syndrome, which is characterized by sudden vasomotor collapse and skin rash due to adrenal hemorrhage. Choice A: in meningococcemia, myocarditis does not occur. It can affect joints, skin, and brain, but heart is spared.
In meningococcemia, myocarditis does not occur, but it can affect joints, skin, and brain, but the heart is spared. Hmm. Okay. Acute respiratory distress syndrome generally does not present in such dramatic fashion. Rather, it presents with signs of hypoxia and infiltrates on chest x-ray. It is a gradual process where oxygenation becomes increasingly difficult. Most individuals require mechanical ventilation. The bone marrow is not affected by meningococcus. Individuals may show leukocytosis with the left ward shift. Okay. Meningococcemia does not directly affect kidneys. The renal failure may be secondary to sepsis and vasomotor failure, wherein severe vasomotor compromise results in decreased renal perfusion. Meningococcemia usually does not cause destruction of thyroid or liver. Bright Hmm. red firm friable exophytic nodule in the presence in a patient with HIV are most likely bacillary angiomatosis. Bacillary angiomatosis and Kaposi sarcoma यहाँ से पढ़ रहा हूँ फिलहाल चलो पढ़ लेता हूँ. The classic lesion is shown in a book. Bacillary angiomatosis is shown. पढ़ो जी हिकअप्स हो रहे हैं पढ़ो. So, private farm travel, exophytic nodule. In a patient with HIV or most likely bacillary angiomatosis, the classic lesion is seen in above picture. Bacillary angiomatosis is caused by Bartonella, a gram-negative bacillus. Oral erythromycin is the antibiotic of choice. Erythromycin is the antibiotic of choice. Choice of bacillary angiomatosis and Kaposi sarcoma may be difficult to distinguish. However, this condition of Kaposi sarcoma also occur on the trunk and extremity. It occurs in the trunk and extremity. Typically, the lesion are papule that become black or nodule. The color change from light brown to pink to dark violet. Bacillary angiomatosis is more likely given in this patient palm, exophytic nodule and fever. अच्छा अच्छा तो the main difference is highly unlikely. Then molluscum contagiosum is caused by a pox virus and characterized by centrally umbilicated dome-shaped papule that are non-fluidic. Herpes infestation are painful and vesicular. Education objective bright red, palm primal exophytic nodule in a patient with HIV are most likely bacillary angiomatosis. Okay. Next question. Next question read करूँ ह्यूमन और करूँ नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा. ये एर्लिकियोसिस वाला है ना जो गलत किया था मैंने. हाँ ऊपर हाँ डॉक्सी मतलब सही किया था. डायग्नोसिस नहीं था मेरे पास. हाँ ओके ओके. एर्लिकियोसिस मुझे नहीं आता. मुझे याद नहीं होता. ओके पढ़ते हैं आगे. Human monocytic ehrlichiosis transmitted by tick vector Lone Star tick, seen in southeastern or south central United States. Flu-like illness, high fever, headache, myalgias, chills, neurologic symptoms, confusion. A rash less than 30% in adults is common. Rocky Mountain spotted fever without spots. Laboratory findings: leukopenia and thrombocytopenia, elevated liver enzyme, and lactate dehydrogenase. Diagnosis by intracytoplasmic moruli in monocytes. PCR testing for Ehrlichia schiphonensis or Ehrlichia eowyngi. Treatment: empiric doxycycline while awaiting confirmatory testing. Empiric doxycycline while awaiting confirmatory testing. Empiric doxycycline while awaiting confirmatory testing. Okay. Educational objective: ehrlichiosis should be suspected in patients from an endemic region with a history of tick bite, febrile illness with systemic symptoms, leukopenia and or thrombocytopenia, and elevated aminotransferase. Rash is uncommon, and the drug of choice is doxycycline. Ehrlichiosis should be suspected in the patient from an endemic region with a history of tick bite, febrile illness with systemic symptoms, leukopenia and or thrombocytopenia and elevated transaminases. Rash is uncommon, and the drug of choice is doxycycline.
ओके, ये हमने पढ़ लिया ना यहाँ तक, डायग्नोसिस पेंडिंग वाला, कंफर्मेटरी टेस्टिंग पेंडिंग, है ना। ये लास्ट पैरा पढ़ा था आप, द डायग्नोसिस ऑफ क्लिनिकल definitive diagnosis made visualizing of intracerebral memorial and white blood cells and through polymerase chain reaction testing. Doxycycline is appropriate treatment and is often initiated empirically when the diagnosis is suspected, while the confirmatory test is pending. हाँ, elevated liver enzymes and hematologic abnormalities, including leukopenia and thrombocytopenia, can be attributed to ehrlichiosis. As a result, hepatitis serologies and bone marrow biopsy would not be warranted. Ceftriaxone is used for the treatment of neurologic and cardiac manifestations of Lyme disease. Several factors make Lyme disease less likely in this patient. Ixodes scapularis, the tick that carries Borrelia burgdorferi, is not commonly found in southern United States. The majority, 80% of the patients with early localized primary Lyme disease within days of the tick bite have classic erythema migraines, rash, with or without constitutional symptoms. The absence of a rash and presence of a high fever and hematologic and liver enzyme abnormalities make Lyme disease less likely. Finally, this patient does not exhibit any prominent neurologic, for example, encephalitis, cranial nerve palsy, radiculopathy, or cardiac, for example, heart block, pericarditis, manifestations of early disseminated secondary Lyme disease. These would more likely occur several weeks to months after the initial tick bite, given the low suspicion for the disease. Lyme serologies would not be indicated if this patient has Lyme disease. Doxycycline would be sufficient to treat it. Chloramphenicol is a second line treatment option for ehrlichiosis and RMSF. It is associated with blood dyscrasias and is not commonly used. In 90% of RMSF Hmm. patients, a maculopapular rash involving the soles and palms occurs a few days after the onset of fever. The presence of leukopenia and absence of rash in this patient are more suggestive of ehrlichiosis rather than RMSF. Doxycycline is the first line treatment. Erythromycin is not an effective treatment of ehrlichiosis. It has activity against Legionella and Mycoplasma. Legionella and Mycoplasma. Okay. Next question. Targetoid rash. Hmm. पढ़ो, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस को पढ़ो. Viral gastroenteritis, okay. Epidemiology, fecal transmission, norovirus, most common among all is and rotavirus. Commonly non-vaccinated, age less than 2. Clinical feature, immunosis, watery diarrhea, abdominal pain, fever. Diagnosis, clinical. Treatment, fluid repletion, oral for mild dehydration, normal vital sign, dry mucous membrane. Intravenous for severe dehydration. Weak rapid pulse marked oliguria, increased capillary refill time. Regular diet with limited fat and simple sugar as tolerated. अच्छा. Consider bacteria or parasitic pathogen for the following: closely blood stool, persistent fever and exposure, international travel, farm animal. The most common cause 70%, more than 70% of acute infection. Infectious gastroenteritis is viral gastroenteritis, as suggested by this child. Acute onset non-bloody watery diarrhea with abdominal pain, low-grade fever, and vomiting. Because most cases of viral gastroenteritis resolve within 2 to 3 days, additional evaluation is not typically needed in absence of features suspicious for bacteria or parasitic pathogen, bloody or prolonged more than 1 week diarrhea, high fever particularly more than 40 degrees Celsius. Oral rehydration. Oral rehydration with a solution containing equimolar concentration of the sodium and glucose is recommended for patients with mild to moderate dehydration. Sign and symptom of may include decreased intake, dry mucous membrane, mildly decreased urine output, and tachycardia. Intravenous rehydration is usually reserved for those who fail oral rehydration
or have severe dehydration. Feature include weak or rapid pulse, reduced skin turgor, prolonged capillary refill, and markedly decreased urine output. None of features seen in this patient. Significant weight loss and lethargy also warrant intravenous fluid. Acha. Antiemetic ondansetron can be considered for patients with persistent vomiting that limit oral rehydration, but antidiarrheal are typically avoided in children because of lack of efficacy and potential adverse effect. Ideas. A regular diet can be resumed as tolerated, but uh, excess fat and simple sugar should be avoided until symptoms improve. Regular diet, acha, but sugar and fat, these two should be avoided. Antimatter can be considered. अच्छा okay. Patient with abdominal pain and diarrhea may warrant abdominal X-ray to evaluate for toxic megacolon. However, presentation typically involve bloody stool in an ill-appearing patient, hypotensive abdominal rebound or guarding. Ill-appearing patient typically require additional evaluations such as complete blood count, electrolyte and blood culture. Choice DNA stool studies such as fecal leukocyte testing and stool culture can be considered for patients with suspected bacterial gastroenteritis. Grossly bloody and mucoid stool or prolonged diarrhea antibiotic therapy may be helpful. Hmm. Uh, Studies such as fecal leukocyte testing and stool culture can be considered for patients with suspected bacterial gastroenteritis, grossly bloody mucoid stool, or prolonged diarrhea. Prolonged diarrhea antibiotic therapy may be helpful in some cases. These patients, their long history of non-bloody diarrhea make a viral etiology most likely and stool study unnecessary. Most acute onset non-bloody diarrhea is due to viral gastroenteritis and resolve within 2 to 3 days. The diagnosis is clinical and additional workup is not typically required. Fluid repletion and dependent volume status, oral rehydration is indicated for mild to moderate dehydration, whereas intravenous fluid are required for severe dehydration. Antibiotic can be considered and a regular diet can be resumed when tolerated. Acha, I have to leave now. My sister is calling actually. Okay, okay. Maybe she needs Wait, some. wait, 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 wait.